Students, here I am going to discuss how to determine the direction of the flux. So let's first talk about the primary winding. So I have said how to determine the direction. Just put your fingers or wrap your fingers in the direction of the current. Just put your fingers in the direction of the current. Here in the primary winding, ठीक है, the direction of current is from left to right. Direction of current is left to right. So put your fingers, all your fingers in the direction of current over the winding. So what will be the direction of the thumb? Direction of the thumb will be towards upwards. Thumb का direction यहाँ पे आएगा upwards, ये आपके fingers आएंगी. So this direction of thumb will give you the direction of flux. So the flux due to the primary current, or the flux due to the exciting current, is from left to right in the clockwise direction. This flux in the clockwise direction. And I have told you the nature of this EMF यहाँ पे शो नहीं किया है. जो यहाँ पे E2 इंड्यूस EMF होगा E2, और यहाँ पे जो V2 वोल्टेज होगा, ठीक है. If I close this switch, the nature of this mutually induced EMF E2, and on closing the switch there will be a flow of current I2 or the load current. But the I2, this I2 current or load current will flow in such a direction that it will produce flux in the opposite direction, or in opposition to this mutual flux, because due to this mutual flux only there is induced EMF here, and due to this induced EMF there is current, there is production of this current. So the current will flow in such a direction, this current I2 will flow in such a direction, it will oppose the this phi m, इसको oppose करेगा. So you can now just by the same rule, by the same determine the direction of this, determine the direction of the flux due to this current I2. इस I2 वैसे का आपका फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ है? पुट योर फिंगर्स. इसमें भी क्या है, हमारा करंट कैसा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है करंट. Why current is flowing in the winding in left to right direction, in this direction. So put your fingers over the winding, and thumb will point you, give you the direction of the flux. तो thumb का कहाँ direction आया? Upwards. Means the flux produced by this current I2 is from is in anti-clockwise direction, and the flux and this mutual flux is in clockwise direction. जो ये I2 flux produce कर रहा है वो क्या है? वो किस डायरेक्शन में? आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दिस फ्लक्स इज ट्राइंग टू अपोज दिस म्यूचुअल फ्लक्स और द टोटल फ्लक्स, इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. I2 will produce flux in anti-clockwise direction, tries to demagnetize the flux phi, ठीक है. तो by this right hand Fleming rule, we will determine the direction of the flux, ठीक है. तो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी later. So we will now. So last time, what I have dictated in the class, I am just going to read that thing. Last time, here in last time, it is just जो मैंने आपको बुक दी है वहां से डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है. So I have explained you the principle. So I am just going to read this principle, whatever I have dictated in the class last time. So what principal operation is, when alternating voltage V1 is supplied to the primary, when alternating voltage V1 is applied to the primary winding of a transformer, a current termed as exciting current, और इसको नो लोड करंट भी बोलते हैं. They have dictated by IV or FI. You can also dictate by IE or I naught. Flows, ठीक है. I am reading from starting. When alternating voltage V1 is supplied to the primary winding of a transformer, a current termed as exciting current flows through it as shown in figure. The exciting current produces an alternating flux phi. आपका exciting current कैसा है? साइनोसॉइडल है, अल्टरनेटिंग है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो भी कैसा होगा? अल्टरनेटिंग होगा. इन द कोर which links with both the winding primary and secondary. So ये कौन सा फ्लक्स हुआ? म्यूचुअल फ्लक्स. According to Faraday's law of electromagnetic induction, the flux will cause self-induced EMF E1 in the primary and mutually induced EMF E2 in the secondary winding. But according to Lenz's law,
According to Lenz's law, primary induced EMF will oppose the applied voltage, that is applied voltage is V1 at the source side, and in magnitude this primary induced EMF is almost equal to the applied voltage. V1 और E1 के बीच में जो ड्रॉप होगी वो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि जो वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है। V1 E1 के बीच में ड्रॉप होगी बहुत ही स्मॉल होगी, जिसलिए हम एज्यूम करेंगे दे आर इक्वल। देयरफॉर इन ब्रीफ वी कैन से EMF induced in the primary winding is equal and opposite to the applied voltage. Voltage induced in the secondary winding Voltage induced in the secondary winding is responsible to deliver power to the load connected to it। ठीक है, जो भी वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज E2, और E2 I2 प्रोड्यूस करेगा, I2 आपका लोड में फ्लो करेगा, पावर देगा उसको। द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज आल्सो इन फेज अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज V1 एट प्राइमरी। E1 E2 दोनों ही आपके फेज अपोजिशन होंगे V1 के। इफ द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, मतलब सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली E2 एंड V2 आर इक्वल। E2 क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, और V2 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल्स पे क्या है आपका लोड कनेक्टेड होता है, लोड वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज। इफ द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, टर्मिनल वोल्टेज V2 एट द सेकेंडरी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and in phase with the induced EMF at the secondary। means ये जो E2 V2 है ये इक्वल भी होंगे, इन फेज भी होंगे। सो बेसिकली E1 E2 एंड V2 आर इन फेज, ठीक है, बट ऑल थ्री आर इन फेज अपोजिशन विद द अप्लाइड वोल्टेज V1, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन।